सब कहां निकल दिया बाहर पार्टी ये है सब करता पहले हर्षिता तुम्हारी
liability partnership as per LLP Act 2008 and rules thereunder, which has been presented by me as Harshita and Pranav and Anmol. What does statutory means? That is of or related to statutes. That is rules and regulations. And compliance means adherence. That is adhering to rules and regulations of a limited liability partnership as per LLP Act 2008. Now, what is LLP? That is limited liability partnership is a partnership formed and registered under the Limited Liability Partnership Act 2008. Coming forward, a foreign limited liability partnership means a limited liability partnership formed, incorporated, or registered outside India, which establishes a place of business within India. Now, the third term we are going to run through, that is a designated partnership identification number, which is abbreviated as DPIN, means an identification number which the central government may allot to an individual intending to be appointed as designated partner of a LLP for the purpose of his identification as such, and includes director identification number, which is called as DIN, issued pursuant to provisions of Companies Act and rules thereunder. Moving further, we'll run through the topic that who can be the officer under LLP Act 2008. Any partner, designated partner, employee of the LLP, or any person in accordance with whose directions or instructions partner of the LLP have been accustomed to act, and any person authorized to accept any service on behalf of a foreign LLP, and partners of such LLP acts or classified as an officer under LLP Act 2008. Now, what is limited liability partnership agreement? It is an means and written agreement between the partners of the LLP or between the LLP and its partners. Like, it works both ways, which determines the mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in relation to that LLP. That means कोई भी limited liability partnership constitute होती है तो उसमें एग्रीमेंट का रिटन एग्रीमेंट होने का बड़ा जरूरी है. Without written agreement, LLP cannot be constituted. Now, moving further, what is meant by body corporate? It is defined in the Section 3 of the Companies Act 1956, and it includes limited liability partnership registered under the Act, limited liability partnership incorporated outside India, and a company incorporated outside India, but it does not include a corporation sole, that is sole proprietorship, cooperative society registered under any law for the time being in force, and any other body corporate not being a company as defined in Section 3 of the Companies Act 1956, or a limited liability partnership as defined in this Act, which the central government may, by notification in the official gazette, specify in this bill. तो ये बॉडी कॉर्पोरेट का कॉन्सेप्ट बहुत जगह आता है जहाँ पे ये कहा जाता है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट पे एप्लीकेबल नहीं है या ये बॉडी कॉर्पोरेट पे एप्लीकेबल है. तो कंपनीज एक्ट में जो बॉडी कॉर्पोरेट है there they have included the limited liability partnership also as a body corporate. So wherever you find that this terminology is there, body corporate terminology is there, that shall include the limited liability partnership also. Now let's run through the slides of incorporation and matters incidental there. Can a limited liability partnership be incorporated for a non-profitable purpose? Of course, no. A LLP can be formed only for carrying lawful business with a view to earn profit by associating two or more persons who shall subscribe their names to an incorporation document. तो लेकिन क्या कोई कंपनी कौन सी वाली कंपनी एक कंपनी तो है they may be for not for profit, but in case of limited liability partnership they will always be for the purpose of profit. So Now, what will be the procedure to incorporate? First, application for digital signature. All the designated partners of the proposed LLP shall obtain designated
partner identification number, DPIN. Now we need to file e-form DIR3 in order to obtain DIN or DPIN. In case you already have a DIN, the state can be used as DPIN. The application for allotment of DIN has to be made in the form DIR3. Form shall be signed by a company secretary, full-time employment of the company, or by the managing director, or the director, or the CEO, or the CFO of the existing company in which the applicant shall be appointed as a director. थोड़ा explain भी कर दो इतनी सारी इंग्लिश को For the purpose of incorporation, one has to obtain the digital signature, which is abbreviated as DPIN or DIN, and for this purpose we need to file form DIR3. Now moving further, we need to reserve our name. For the reservation of the name, LLP run, Limited Liability Partnership, reserve unique name. Is filed for the reservation of the name of the proposed LLP, which shall be proposed by the Central Registration Center under non-SDP. The name in the form shall be checked with the names of the existing companies, LLPs. The registrar will approve not undesirable the opinion of the central government and does not resemble any existing firm or LLP or a body corporate or a trademark. That means for the reservation of the name, we need to select the unique name, which in the eye of the central government is applicable and does not resemble with any existing company. The form run LLP has to be accompanied with fees as prescribed, which may be either approved or rejected by the registrar. A resubmission of the form shall be allowed to be made within 15 days of the rectifying the defects. There is a provision to provide for two proposed names of the LLP. That means we can reapply for the reservation of the name within 15 days or for any defect. Now moving further for the incorporation of the LLP, the form used for incorporation is FILLIP, Form for Incorporation of Limited Liability Partnership, which shall be filed with the registrar who has the jurisdiction over the state in which the registered office of the LLP is. The form will be an integrated form that in whichever state the LLP has to be registered, it has to file with that registrar. Fees as prescribed shall be paid. The form also provides for applying for allotment of DPIN if an individual who is to be appointed as designated partner does not have a DPIN or DIN. The application for allotment shall be allowed to be made by two individuals. Application can be made only by two individuals, not more than two individuals. The application for reservation may be to if the name that is applied for is approved, then this approved and reserved name shall be filed as the proposed name of the LLP. Then that will be the name of the LLP. Limited Liability Partnership Agreement (LLP) agreement governs the mutual rights and duties amongst the partners and between the partners and its partners, LLP and its partners. It must be filed in Form 3 online on the NCA portal. Form 3 or LLP agreement has to be filed within 30 days of the incorporation. Like we need to file the Form 3 within 30 days from the date of the incorporation of the LLP. It has to be printed on the stamp paper. The value of the stamp paper is different for every state. It depends on the state in which the LLP is registered. Now moving further, we'll run through the forms of the LLP. First is based on the formation of the LLP. Next will based on the availability. Now third will be based on the incorporation and fourth certificate of incorporation. We'll first run through the form number 2 of the LLP. Form 2 LLP is a document provided under the Limited Liability Partnership Act 2000. It is used for the incorporation of the limited liability partnership in India. Here are some key points covered in the Form 2 LLP. First is LLP name. The proposed name of the LLP, which should comply with the naming guidelines specified under the LLP. So what name should be selected for the LLP is specified in the guidelines under the LLP Act. Next, registered office. The address where the registered office of the LLP will be. This address must be valid and verifiable. Details of the partners. The names, the addresses, and the identification details such as PAN number, PAN card numbers of all the partners. Designation of at least two partners to be acted as
Like if there are 5 partners, then 2 should be the designated partner. At least more than 2 can be the designated partners. Now, capital contribution. Contribution of each partner towards the LLP in terms of money, property, or other benefits. Details of the LLP agreement, where an LLP agreement has been executed along with a copy of agreement if available. Subscription sheet. Declaration by the proposed partners stating their intention to become the partners of the LLP. Consent and approval of each partner to become a partner of the LLP. Form 2 LLP is a critical document as it formally registers the LLP with the registrar of the company. It must be filed out accurately and submitted along with necessary supporting documents and fees to complete the incorporation process of the LLP. Now, this is all about the Form 2. Moving further, information regarding the LLP. First is about the incorporation. Second, we need to obtain the DPIN for the partners. Third, we need to prepare the LLP agreement in the Form 3. Now, let's run through the Form 3 of the LLP. Form 3 LLP is the document. 5 members of the liability partnership act 2008. And here they are brief summary of some purpose and content. Purpose. Form 3 LLP. Okay, now Form 3. What is the purpose of the Form 3? Form 3 LLP is used for filing the LLP agreement and changes here with the registrar of the company in India. What are the contents of the Form 3? First is LLP agreement. Copy of the LLP agreement must be filed in Form 3 LLP. The agreement outlines the mutual rights and duties of the partners and the conduct of the LLP's business. Next is details of the partners, information about all the partners, including addresses and the contribution of to the LLP. For the partners who have contributed to the LLP. Date of agreement, the date on which the LLP agreement is executed. Details of the designated partner, identification and details of the designated partners who are responsible for regulatory compliance. Confirmation. Confirmation that all the partners have consented to the LLP agreement and its terms. Form 3 LLP is crucial for the ongoing compliance of the LLP and must be filed within 30 days of the LLP. Early changes here. Once the LLP agreement has been filed, it has to be filed within 30 days. It ensures transparency and legal clarity in operations of the LLP. Now, moving further towards the Form 11, which is for the annual compliance, like for filing the annual return of. तो अभी तक जो फॉर्म डिस्कस किए वो शायद अपने बहुत ज्यादा काम नहीं आते कि जनरली जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं या जिसको कंपनी एलएलपी जिसने इनकॉर्पोरेट करानी है उसको फॉर्म 2 फाइल करना है पहले उसको फॉर्म फाइल करना है रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ द नेम एंड देन दे विल फाइल द फॉर्म incorporation document and then the form 3 is basically information with regard to LLP agreement and changes. ये सारे फॉर्मुलेटिव और जो आगे के फॉर्म्स हैं तो आप अगर मान लो एलएलपी का ऑडिट कर रहे हो दैट मींस ये सारी कंप्लायंस तो वहां हो ही रहती होगी जब भी वो एलएलपी इनफैक्ट इनकॉर्पोरेट हुई है अदरवाइज वो एलएलपी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई हो तो जब कभी भी किसी को मान लो ये मौका मिले कि एलएलपी कैसे इनकॉर्पोरेट करानी है तो उनको ये सारी चीजें और उसमें जितने भी के पार्टनर्स हैं रिलेटेड के आइडेंटिफिकेशन नंबर्स दे हैव टू ओपन दोस आइडेंटिफिकेशन जैसे डायरेक्टर्स के केस के अंदर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ले रहे हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन और मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने जरूरी है एलएलपी के अंदर 2 से ज्यादा भी पार्टनर हो सकते हैं बट मिनिमम पार्टनर रिक्वायरमेंट इज
यस LLP एग्रीमेंट इन्होंने जो लिखा वहां तो लिखा कि इफ एनी, बट मुझे लगा कि LLP एग्रीमेंट तो मैंडेटरी ही होगा, यहाँ लिखा है डाउट दैट इज करेक्ट. LLP agreement should be there for the purpose of LLP. अदरवाइज ये फॉर्म 3 जो है वो कैसे फिल करेंगे, LLP एग्रीमेंट से रिलेटेड ही वो देनी हो. तो कंटिन्यू विद योर सब्सिक्वेंट स्लाइड्स एंड माय रिक्वेस्ट इज दैट आप इसको केवल पढ़े नहीं, एक्सप्लेन भी करें. Now let's run through the form number, which is for filing the annual report. Form 11A, also known as the annual return of liability partnership, the document required under the Limited Liability Partnership Act 2000. Here is the summary of its purpose and the contents. The below are the details of its contents and the for what purpose the Form 11 will be filed. First, partnership details. Total number of partners in the LLP. Changes in the partners during the financial year, if any. Details of the designated partners or PAN. Like we need to find the partnership details in the form number 11. First, we need to specify the number of partners in the LLP. And if any changes are made in the financial year, that we need to specify any details of the designated partners, including the DIN and the PAN number. Statement of account and solvency. Second, we need to fill with the statement of solvency signed by the designated partners, declaring that the LLP is solvent and can meet liability. Annual compliance. Confirmation that the LLP has complied with all the legal requirements and provisions of the LLP Act during the financial year. Attachments. These are the few attachments that need to be attached along with the Form 11. Copy of the financial statements, including the balance sheet and P&L account. Copy of any amendments made in the LLP agreement during the year. Form 11 LLP is typically due within 60 days from the closure of the financial year. That is by 30th of the May each year for LLPs within financial year ending on 31st March. It ensures transparency and regulatory compliance while LLP is operating in. We have 60 days. We have 60 days to attach these two copies along with the Form 11. Next form that we need to file is Form 8. Form 8 LLP is a document required under the Limited Liability Partnership Act 2008, used for filing statement of account and solvency of the LLP with the registrar of the company. There is again the summary of its purpose and its content. Financial statements. But we need to add the balance sheet. Present the financial position of the LLP showing its assets, liabilities, and equity as of the end of the financial year. As we all know, balance sheet specifies the assets and liabilities and equity as of the end of the financial year. Next, we need to attach the statement of the profit and loss account, reflects the income earned and expenses incurred by the LLP during the financial year. Next is statement of solvency, which will be signed by the designated partners. This statement confirms that the LLP is solvent
solvent or insolvent by filing the statement of the solvency with the registrar of the company. Attachments: copy of the financial statements, one balance sheet, and next is the statement of the profit and loss account. Documents supporting the financial statements such as schedules and notes to accounts. Form 8 LLP is typically due within 30 days from the end of the 6 months of the financial year. That is by October 30th for LLPs with the financial year ending on March 31st. That our financial year ends on the 31st March every year, and within 30 days we need to file the form number 8. It is essential for maintaining the statutory compliance and providing transparency regarding the financial health of the LLP. Very essential to file this form, comply with the statutory compliances and providing the transparency that the LLP has been incorporated and it's a healthy LLP. Like it is not insolvent, it is solvent. Now next, changes and amendments. First we'll run through the changes, then we'll form number 4 and form number 5. Notice of appointment is change in name, address, designation of a designated partner or partner, and consent to become a partner or a designated partner. For this, we need to find the form number 4. Form number 4 is a document required under the Liability Partnership Act 2008, used for notifying the registrar of the companies in India about the changes in the partners or the designated partners of the LLP. Like if there is any change in the number of the partners or the name of the partner, then we need to file the form number 4. There is a summary of the purpose and the contents. Changes in the partners. अच्छा, ये जो बता रहे हैं कि सब आपको चेंजेस जो है जो भी है फॉर्म 4 में देखने हैं, आपके ऑडिट के पर्पस से आप क्या सोचते हो कि इसका कोई रेफरेंस है? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? सी देखिए, अगर मान लीजिए उन्होंने एलएलपी एग्रीमेंट में चेंज कर दिया और ये फॉर्म 4 जो है ये फाइल नहीं किया, दैट मींस दैट चेंज इज नॉट ए वैलिड चेंज. अकॉर्डिंगली दैट चेंज इज नॉट ए वैलिड चेंज, तो उसका क्या इंपैक्ट होना चाहिए? आप जब कुछ एलएलपी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल कर रहे हो, आपको ये देखना पड़ेगा ना साहब इन्होंने एग्रीमेंट के चेंजेस को वहां रजिस्टर कराया नहीं कराया, और अगर वहां रजिस्टर नहीं कराया तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि साहब बना एग्रीमेंट वही रहेगा, या फिर आपको उस नॉन कंप्लायंस को लिखना पड़ेगा. They have not filled it with the respective MCA. ये वैसे ही है जैसे अपन चार्ज करते हैं, आप कोई लोन ले रहे हो और किसी एसेट का आपने चार्ज किसी लेंडर को दे रखा है, and we need to register the charge. तो अगर वो चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो क्या होता है? तो अपन इनवैलिड मानते हैं ना. तो ये therefore अपना तो ये करने का पर्पस है आज रास्ता वो यही है कि जितने भी फॉर्मेलिटीज हैं, whether those formalities are done or not by the client, जिनका भी आप ऑडिट कर रहे हो इंटरनल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. सिंपली जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनका वेरिफिकेशन एक अलग चीज है, बट जो रेस्पेक्टिव चेंजेस फर्म के अंदर हो रहे हैं या पार्टनरशिप कंपनी में हो रहे हैं, तो उनकी जो भी रेस्पेक्टिव फॉर्मेलिटीज है वो एमसीए के साथ हो रही है या नहीं हो रही है. तो ये आपके पास में आपको अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता है कि साहब एलएलपी एग्रीमेंट कोई चेंज हो रहा है, तो उसकी फॉर्म 4 के अंदर एमसीए के अंदर फाइलिंग होती है. If you do not know about it, तो आप चेक क्या करो? So therefore, whoever is auditing any of the LLP should know that what are the formalities, what are the forms which are required to be filled by those LLPs, which will be relevant during the audit also. Upon filing the form 4,
we need to file this if there are some changes in the partners. Addition of the new partners. Details of the new partners joining the LLP, including their name, address, contribution to the LLP, and permanent account number. If there is any resignation of the partners, then details of the partners resigning from the LLP, including their name and the PAN. Changes in the designated partners. Addition of new designated partners. Details of the partners who will now act as designated partners, including their director identification number or the PAN. Designated partner का क्या रूल होता है? एक जना कोई खड़ा होकर जैसे एक बोर्ड होता है कंपनी में, उसी तरीके से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का रोल होता है. जितने भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी लीगल कंप्लायंस होती है, प्लानिंग की अथॉरिटी होती है, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास में हो सकती है. Effective date. It specifies the effective date of changes in the partners or the designated partners. Now, what are the attachments that need to be attached while filing the Form 4? Supporting documents, if any, such as resignation letters, consent letters from the partners, and revised LLP agreement if applicable. Form 4 LLP must be filed within 30 days of the occurrence of the event. Like if there is any addition of the partner or the resignation of the partner, then of that event, within 30 days of that occurrence of the event, we need to file with the ROC. It ensures that the ROC has updated and accurate information about the LLP's management structure and partners. This helps in maintaining compliance with statutory requirements and ensuring transparency in the LLP's. Now, moving further, we'll file the Form 3 of the LLP. Form 5 LLP is a document required under the Limited Liability Partnership Act 2008, used for providing specific details regarding the LLP's management structure. The summary of this purpose and content. First is LLP information. It includes details such as LLP name, registration number, old registered office address, and new registered office address. And what is the reason for the change? Why LLP has been changed? Explanation for changing the registered office address of the LLP is applicable. Confirmation. Declaration confirming that the new registered office address is effective for carrying out the business activities of the LLP. Attachments. Supporting documents, if any, such as proof of the new registered office address, for example, utility bill, rental agreement, or ownership proof. Filing requirements. Form 5 LLP must be filed within 30 days of changing the registered office address. The LLP must ensure that the new registered office address is capable of receiving and acknowledging all communications and notices as required by the law. जो भी नया ऑफिस रजिस्टर चेंज हुआ है तो उसमें वो होना चाहिए जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स डिलीवर हो रहे हो, वहाँ सारे एक्नॉलेजमेंट्स डिलीवर हो रहे हो. And within 30 days, we need to register for the new address. What is the importance of the Form 5? Form 5 LLP is crucial as it ensures that the ROC has updated and accurate information about the LLP's registered office address. This helps in maintaining compliance with statutory requirements and ensure that stakeholders and authorities can communicate effectively with the LLP. Now, moving further, we'll talk about the closure or the winding up of the Limited Liability Partnership Act. Form 25 LLP is used for filing an application for striking of the name of a defunct LLP from the records of the registrar of the companies in India. अगर LLP ने कुछ statutory compliances नहीं follow करे, then for the defunct of the name of the LLP from the registrar of the companies, we need to file the Form LLP. What are the contents and the purpose of the Form 25? LLP information includes details such as LLP's name, registration number, and registered office address. Reason for striking of the name from the registrar of the company. Declaration stating that the LLP has ceased its business operation for at least 1 year preceding the date of the application. Statement of the accounts. Statement of accounts showing the LLP has no assets or liabilities as of the date of the application. Consent of the partners. Consent of all the partners for striking of the LLP's name.
affidavit. The affidavit verifying the contents of the application and confirming that all legal requirements have been complied with. Filing requirements. Form 25 penalty must be filed with the ROC along with the necessary documents mentioned above. The application should be accompanied by proof that the LLP has ceased its business activities for at least 1 year. ये proof करना पड़ेगा कि जो LLP है उसने अपना business नहीं कर रही है for at least 1 year. Then it has to file the form LLP for the striking of the name. Now I'll ask Pranav to continue further. You know, you can start if you do. Or As Harshita discussed about various forms filed to be filed by the LLP, I will be covering compounding of offences in case of LLPs. In case of LLP, I will be covering the topic such as compounding of offences, investigation done by the inspector, which is appointed by the government. I will be covering foreign LLPs and the alteration made in foreign LLPs. So I will be starting with compounding offences. I would like one of you to give an example that can be compounded. Even compounding क्या होता है आपको? okay, so let me first tell about how an offense is compounded. What is compounding? Combining multiple offenses. गाँव में कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? ये तो कंपाउंडिंग का बोल रहे हैं कि जब कोई कंपनी या कोई भी या कोई पर्सन बहुत सारी चीजों का वायलेशन कर रहा हो तो उसके लिए लॉ में ये व्यवस्था की गई है वो कुछ अमाउंट दे करके कुछ पेनल्टी दे करके और उन सारे कंपाउंडिंग से सारे भरी होती तो उसको ये बोलते हैं कंपाउंडिंग सारी चीजों को इकट्ठा करके और एक ये कंपाउंडिंग जो है केवल कंपनी लॉ या एलएलपी में भी है ये आरबीआई में भी होती है ये व्यवहार से रिलेटेड रेगुलेशंस में भी है ये इनकम टैक्स में भी है ये जीएसटी में भी है तो जगह जगह आप देखेंगे कंपाउंडिंग के प्रोविजंस जो है वो लॉ में दिए गए हैं और उसका मतलब यही है अगर कोई वायलेशन ऑफ लॉ कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं एक साल किया दूसरे साल भी किया तीसरे साल भी किया या एक ही साल में मोर देन वन वायलेशन ऑफ लॉ इज देयर तो लॉ में ये व्यवस्था दी हुई है कि सारी जितने भी आपने ऑफेंसेस किए हैं जितने भी आपने नॉन कंप्लायंस किए हैं इनका हम कंपाउंड करके तो उनको हम इकट्ठा करके एक साथ हम आपको कुछ अमाउंट लेवी कर देते हैं pay that all these offenses
explain? As Sir rightly explained, compounding of offenses in various scenarios, in various laws. It can be seen in real life also, in day-to-day life. Now, can anyone give an example? एक एग्जांपल तो ये हो गया कि आप सब नहीं आता है, ये कंपाउंडिंग करके ये कर दिया कि करिए सारा यही पे है, तो दैट इज आल्सो, ये तो आज की क्लास है और आगे से की क्लास है, इट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कि आपने इतने सारे वायलेशन किए, तो वायलेशन जितने भी किए उन सबका आज से सब ठीक है. Compounding of offenses is the compounding of offenses refers to the practice of combining multiple criminal charges or convictions into single case or a sentence. बहुत सारे केसेस जैसे सर ने समझाया, ओके, सिंगल केस में कन्विक्ट हुआ, जैसे आज की क्लास है, there are some of the times in which the party is concerned might reach a settlement when the proceedings are going on, but the further proceedings in the court will be suspended. One of the example can be like the auntie is creating the conflict today between us and the parking plots. So now moving forward with the LLP specifically, तो वो हवा निकाल कर we will pay the parking charges, it will be compounded. In case of LLPs, the offences will be compounded by central government only. No other authorities have the authority to do so. And it will be done when a form will be filed with the registrar. It is an electronic form, e-form 30. The registrar will add upon its comments, his comments or then will forward to the central government. And in case an offences has been compounded already, then within 7 days of being compounded, the LLP has to file form 20 with the registrar. दो फॉर्म्स हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है 31, वो कंपाउंडिंग के पहले है, कंपाउंडिंग उनको स्टार्ट करनी है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा उसका कोई फिजिकल फॉर्म फाइल है, जो रजिस्ट्रार को फाइल होगा, रजिस्ट्रार अपने कमेंट्स ऐड करेगा कि कंपाउंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड होगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फाइनल डिसीजन. और अगर जैसे कंपाउंड हो गया, फॉर्म लिमिटेड फाइल करा आपने, कंपाउंड हो तो फॉर्म 20 फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, एलएलपी फाइल करेगा, विद ऑब्वियसली डेजिग्नेटेड पार्टनर विल साइन अपॉन दैट. इनको फाइल होगा रजिस्ट्रार को 7 डेज कंपाउंड होने के अंदर. और इन केसेस में ऑब्वियसली कुछ रिटर्न स्टेटमेंट्स या अकाउंट से बैलेंस शीट वगैरह जो भी नीडेड होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को या रजिस्ट्रार को, तो दे विल अपॉइंट एनी डेजिग्नेटेड पार्टनर और असाइन within the LLP only to provide the same. I will talk about the investigations that are conducted in case of LLPs. Investigation normally कोई भी चीज को देखना whether ये सही से हो रही है नहीं. In case of LLPs specifically देखा जाएगा कि statutory compliance है, legal compliance है, ROCE compliance है, compliance with central government है, ये और भी compliances है तो सही से carry on हो रही है नहीं. और इसके लिए इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है स्पेसिफिक इन गवर्नमेंट. There are many various ways in which investigation can be initiated. अभी investigation चालू नहीं हुई, initiate हो रही है. It can be initiated by 4 persons, 4 entities, court itself, partners of the LLP itself, in which partner अलग हो गए, LLP अलग हो गए. LLP के अंदर कुछ partner है, वो चाह रहे हैं investigation कराना, तो entire LLP खुद चाह रही है कि पूरी investigation, और एक central government खुद जो कि authority को है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इनिशिएट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एनी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी अगर खुद के ओपिनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई एलएलपी लगती है जो डिफ्रॉड कर रही है या कुछ भी रेगुलेटरी कंप्लायंस में अनकंप्लाइड कर रही है, तो वो करेगी. But in the opinion of the central government, the affairs of the LLP ought to be investigated. The central government has the power to appoint one or more of the competent person as inspector. जरूरी नहीं है कि एक ही जगह इंस्पेक्टर अपॉइंट हो, a team of inspectors can be there which can be initiating or carrying on the investigations in the case of LLPs. और इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, जैसे अदर केसेस में होता है, लॉज में होता है, एक दिन में पूरी होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, ऐसा कोई टाइम लिमिट यहाँ पे नहीं. LLP application, if the LLP makes an application to the central government that the affairs of LLP ought to be investigated. LLP ने complete LLP जिसमें designated partner obviously आगे रहेंगे क्योंकि वही सारी चीजों के रिस्पॉन्सिबल हैं, तो LLP खुद एप्लीकेशन दे सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन. फिर पार्टनर्स जो
LLP के अंदर पार्टनर्स है, n number of partners can be there, minimum 2 should be there obviously. So 1/5 of the total number of partners can make an application to the central government to initiate an investigation in case of LLPs. So application हर केस में से अपन ने देखा पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट साइडलाइन में ROCs एंड ऑल वगैरह रहते हैं, बट मेन एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएट करवाएगा इन्वेस्टिगेशन. और कोर्ट ऑर्डर्स कैन बी डायरेक्टली लाइक ट्राइब्यूनल्स इन अदर कोर्ट्स can directly file to the central government or request central government to initiate the investigations in case of LLPs. So when an investigation can be initiated, there are three or n number of ways can be there, but majorly three. It covers various subheadings like frauds, if any LLP is carrying on any fraud, non-compliance with the act, or regulatory concerns. रेगुलेटरी कंसर्न्स की वही आ गई जब सर ने समझाया था सीएस के भी काफी कंप्लेंट्स होते हैं एलएलपी में, तो अगर वो भी सही से नहीं कर रहा तो एक्चुअली देखा जाए तो एलएलपी नॉन कंप्लाई कर सीएस तो बस उसको सर्टिफाई कर. तो रेगुलेटरी कंसर्न नॉन कंप्लायंस का एक्ट्स हो सकते हैं, फ्रॉडुलेंट हो सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि अब मेरे से फ्रॉड करा खुद ही सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एरर की केस में हो सकती है, बट वो आईडी नॉन कंप्लायंस से करेक्ट. दिस in case of fraudulent or unlawful conduct, if the business of limited liability कैसे दिखना चाहिए, मेरा चेहरा दिखना चाहिए. if business of the limited liability partnership is being conducted with an intent to defraud the creditors, partners, or any other person, or other persons involved like ROCs, MCA, or any other person, or unlawful purpose in any manner opposed to the laws, compliance, and any other ways. So fraudulent practices में ये आ गया, but errors भी cover mention किए. ऐसे नहीं है कि आपने error बोल के आप छूट सकते हो. तो नॉन कंप्लायंस विद द एक्ट में एरर्स आ जाएंगे और फ्रॉड्स आएंगे अपने फ्रॉडुलेंट. नॉन कंप्लायंस विद द एक्ट में आ जाएगा सेकंड लॉ में रहता है, इफ द अफेयर्स ऑफ द लिमिटेड पार्टनरशिप not being conducted in accordance with the provisions of the act, the registrar or any other investigating or regulatory agency may recommend an investigation into the LLP affairs. तो इसमें भी जैसे हमने देखा कि रजिस्ट्रार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साइड बाय साइड है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है इंस्पेक्टर को, तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट तो इन लाइन है, और रजिस्ट्रार देखेगा कंप्लाइंस हुई है नहीं हुई है. जैसे वेरियस फॉर्म्स अर्चना ने दिए थे जो रजिस्ट्रार के पास फाइल्ड हो रहे हैं, तो उनकी कंप्लाइंस वहां देखी जाएगी. रेगुलेटरी कंसर्न्स में आएगा, जो रेगुलेटरी कंसर्न्स है उसके अगेंस्ट में जाके कुछ काम हो रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए. तो इट सेज दैट ऑन द रिसीट ऑफ रिपोर्ट or any other investigating or regulatory agencies, the government may form an opinion that there are sufficient reasons the affairs of limited liability partnership to be investigated. Same here also, it says that central government and register both will be side by side. So then, as I said, the inspector will be appointed by the central government. So what are the powers given to the inspector? So inspector should be appointed by the central government for exercising power of any investigation. अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट करना है उससे पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल तो लेगा ही लेगा. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं गया तो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट नहीं हो सकता. लाइक एनी इंस्पेक्टर कांट बी लाइक ओवर पावर और यूज हिज अथॉरिटी एज अ पेड टर्म. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल्स लगेगा. और स्पेसिफिकली थर्ड पॉइंट में कहा गया कि फर्म, बॉडी ऑपरेट और अदर एसोसिएट, मतलब इंडिविजुअल्स ही बन सकते हैं इंस्पेक्टर्स. और इंडिविजुअल में भी ऐसा नहीं है कि सिंगल भी रहना है. 2 or more individuals can be there, a team of individuals can be there. So now the powers of the inspector are that the books and statements, balance sheets, P&L, whatever he will take to investigate the entity. जैसा हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि उसको बुक स्टेटमेंट या कुछ भी चाहिए होगी तो डेजिग्नेटेड पार्टनर से मंगवा सकते. तो उस केस में वो उनकी कस्टडी खुद रखेगा और किसी से भी शेयर नहीं करेगा. ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट ये रूल ऑफ अथॉरिटी होता है कि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो किसी और से शेयर ना करें. ये विद इन 30 डेज उसको प्रोड्यूस करनी है. और एंटिटी के बुक्स एंड अकाउंट्स हैं, इंडिविजुअल अपने पास जो इंस्पेक्टर है वो रखेगा. In where the inspector thinks that it is necessary to investigate the affairs of the former designated, जो अभी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है LLP है, उनका इन्वेस्टिगेशन तो वो करेगा. और जो फॉर्मल है, जो छोड़ के चल चुके हैं, उनकी भी इंस्पेक्शन हो सकती है, बट उसका अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा. और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो छोड़ चुका है वो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाए.
So consequences of non-compliance, various compliance we talked about, like what are the consequences of non-compliance? First, let us see what are the non-compliances which can be there in case of LLPs. If a person fail without reasonable cause या reasonable reasons हो, तो हम consider कर लेंगे, but cause नहीं है या refuses है, जो unnecessary refuses है, inspector any person authorized in his behalf with the previous approval of the central government. अगर उसने books पढ़ी, information क्लियर नहीं हुआ इंस्पेक्टर के सामने डेजिग्नेटेड तो शो कॉज नोटिस जो मिला अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के लिए वो गया ही नहीं, तो ऐसा नहीं है कि उसको फिर भी ऑप्शन दिया जाएगा कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के लिए आंसर्स टू एनी क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द इंस्पेक्टर कॉन्फिस्केशन हो सकते हैं, साइंस गलत हो सकते हैं, इन सब केसेस में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे लाइक इन द लास्ट पार्ट इट इज मेंशन्ड दैट फाइन विल बी पेबल which shall be not less than 2,000 rupees but which may extend to 25,000 rupees and there will be additional fine for per day non compliances. अगर आपने एक दिन नॉन कंप्लाइंस करी तो आप 2,000 से लेकर 25,000 तक लेके छूट सकते हो, बट उसके अगले दिन से अगर आप कंप्लाइंस कंटिन्यू नॉन कंप्लाइंस कंटिन्यू करे जा रहे हैं तो 50 रुपीज से लेकर 500 रुपीज तक पर डे चार्ज एक्स्ट्रा लगाया. डिफरिंग ऑफ एक्सपेंसेस इncidental to the investigation. जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके लिए जो एक्सपेंस लगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बेयर नहीं करती है, वो भी जब इंसान कन्विक्टेड हुआ है या प्रोसिक्यूशन में है उससे ही रिकवर किया जाता है. बट अगर मानो कोई पकड़ा ही नहीं गया, नॉट एनी पर्सन इज नॉट बीइंग कन्विक्टेड और प्रोसिक्यूटेड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उससे पैसे लेती है जिसने अप्लाई किया था इन्वेस्टिगेशन के लिए. So any person who is convicted on a prosecution or who is ordered to pay damages or restore any property in proceeding may in the same proceeding be ordered to pay the said expenses to such extent as may be specified by the court, ordering him to pay such a damages, restore such property in the case being. जो भी इंसान कन्विक्टेड हुआ है प्रोसिक्यूशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बोलेगी कि ये जो एक्सपेंस हमारा इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया है प्रोसीडिंग्स कस्टडी में, इनका एक्सपेंस वो खुद बियर करे. जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी हमने उसकी कॉन्फिस्केट कर ली है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो प्रॉपर्टी से जो रियलाइजेशन होगा वो पहले एक्सपेंस में जाएगा, फिर एक्सपेंस से जो बचेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट any entities the proceeding are brought as a foresight said to be liable to be extend to the of the amount or value or any sum of the property recovered by it as a result of the proceedings. An amount for it is liable shall be first charged on the sum of property. As I said, that it will be first charged against the property for expense and then the remaining amount will be taken by central government. Unless as a result of investigation, prosecution is initiated, an entity or a partner or designated partner or any other person engaged with the investigation shall be liable to reimburse the central government in the respect of all the expenses which shall be recoverable as area of land revenue and the applicants for the investigation where the inspector was appointed. लैंड रेवेन्यू का जैसे कलेक्शन होता है अलग अलग स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो जैसे लैंड रेवेन्यू का एक्सपेंस कलेक्ट करती है वैसे ही ये भी कलेक्ट किया जाएगा एक्सपेंस. Now moving forward with the conversion into LLP, a firm can be converted into LLP by filing a form number 17 along with the corporation documents, statements and referred in section 11 of the section 11 में नॉर्मल स्टेटमेंट्स दे रखी है जैसे दो पार्टनर होने चाहिए मिनिमम, पर एक सिंगल पर्सन तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑब्वियसली नहीं हो सकता या एलएलपी नहीं हो सकता. तो ये सेक्शन 11 में से नॉर्मल टर्म्स दे रखे हैं कि डेजिग्नेटेड पार्टनर, जैसे हर्षदा ने बताया था कि दो डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम होने चाहिए. तो a firm may apply to convert it by filing with the registrar all its partners, specifically mentioned that all its partners statement होनी चाहिए form 17 और incorporation documents होने चाहिए जैसे LLP agreements other agreements between the partners with तो वो भी मेंशन होना चाहिए फॉर्म नंबर 17 में. नाउ रजिस्ट्रार के पास वो फॉर्म जाएगा फॉर्म 17, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल्स करेंगे और 15 डेज में रजिस्टर फॉर्म 19 में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 15 डेज में फॉर्म 19 इशू करेगा जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. दिस इज ऑब्वियसली द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर एन एलएलपी एज इट सेज ऑफ द सर्टिफिकेशन. In case where LLP is converted from a partnership firm to an LLP, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन है कि फॉर्म नंबर 14 हमें पार्टनरशिप जो कर रहा था गवर्न उनको फाइल करना है कि आरओसी को, क्योंकि आरओसी गवर्निंग अथॉरिटी है एलएलपी. आरओसी और सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी के दिया है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के लिए जो गवर्निंग अथॉरिटी थी इनका उनको फाइल करना है फॉर्म 14. और नाउ विल लुक अपॉन which are the entities which are eligible for a conversion. So specifically mentioned that no
लिमिटेड, नो लिस्टेड पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एलएलपी। और सब तरह की जैसे फर्म्स है, पार्टनरशिप है, फर्म पार्टनरशिप है, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड public company can be get converted into LLPs, as we studied in our direct taxes also, that how this conversion happens. So unlisted public company, private company, and a firm, which is partnership firm, can be converted into LLP. In no listed public company, specifically listed public company, cannot be converted into LLPs. Now, it is a conversion procedure in brief. Inside here, what are the forms like we studied form 17, 19, and form 14. Form 17 was to apply for conversion, form 19 was certificate for conversion, and form 14 was which was filed with the partnership to after getting converted. Eligible entities learned that private companies, unlisted public companies, listed public companies can be converted specification, and firms, listed public companies and private companies can be converted. The role of registrar, we see that registrar will file with the registrar will file form number 17 and he will give a certificate in form number 19. And in case registrar ने मना कर दिया register करने से, तो there is a catch that we can file with the tribunal also within 60 days of dismissal of registrar. इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन की इफेक्ट क्या होंगे? हमने पार्टनरशिप से एलएलपी में कन्वर्ट तो कर लिया, पर इससे बहुत चीजें, एक तो हमारी नाम के आगे एलएलपी लग जाएगा, जो कि एलएलपी हमको अपने नाम के आगे लगाना पड़ता है। असेट्स एंड लायबिलिटीज जो पार्टनरशिप के थे या कंपनी के थे या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के थे, कन्वर्ट हो जाएंगे एलएलपी। तो सारे अब एलएलपी की बुक्स जो बनेगी इसमें सेम एज इट इज आएंगे, और जो भी प्रोसिक्यूशन थे, पेंडिंग केसेस थे, ट्राइब्यूनल्स में चल रहे थे और अलग अलग कंटेंडर्स के साथ चल रहे थे, वो एलएलपी के नाम पे चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एलएलपी में कन्वर्ट हो गए, तो वो हमने छोड़ दिए। Now, in case of foreign LLPs, the normal LLP was discussed by Harshita. Now, I will be covering the foreign LLP partnership. Foreign LLP partnership वो पार्टनरशिप होती है जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, पर ऐसा नहीं है कि उसमें इंडिया के पार्टनर्स एनरोल नहीं कर सकते। इंडिया के पार्टनर्स कैन बी पार्टनर्स है, बट द फर्म इज टू बी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया. So, filing requirements for the foreign partnership is foreign LLPs. Foreign LLP shall within 30 days of establishing a place of business in India. नॉट आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया कभी हो सकती है, पर जब इंडिया में एस्टेब्लिश करेगा उसके विद इन 30 डेज उसमें फॉर्म 27 है रजिस्ट्रार के साथ, जो रजिस्ट्रार है जिसकी जुरिडिक्शन है एमसीए, वो भी न्यू दिल्ली वाला, नॉट एनी अदर एमसी। यहाँ पे फॉरेन एलएलपी है, ये फॉरेन एलएलपी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर कंट्री, वो वाली फॉरेन एलएलपी है। ऐसा नहीं है कि फॉरेन एलएलपी कोई यहाँ वाला पर्सन बाहर जाके फॉरेन एलएलपी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें फेमा के रिफरेंस देखने होंगे, और फेमा में बेसिकली कोई भी बाहर ओवरसीज डायरेक्ट इनटू ए कंपनी ओनली and not into any LLP. I talked about FEMA and FCR is also there for the same. FCR and FEMA both govern together, and various schedules are also there that where we have to take the approvals of central government, where we have to take the approvals of RBI, and various cases are also there that without approval we can also invest in foreign companies. LLP is But FCR is different. FCR is different. FCR is Foreign Contribution Regulation Act, जिसके अंदर कोई बाहर का पर्सन आपको यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर्टिकुलरली जो एनजीओज और ट्रस्ट उनके लिए, and if they want that contribution from outside India, then they have to register themselves under the FCR. तो एक अलग चैप्टर है, उसके भी किसी दिन क्लास करेंगे। So the Form 27 will be filed with the registrar within 30 days in cooperation of a business in India, not only outside India. जब इंडिया में होगा उसके 30 डेज में रजिस्ट्रार को फाइल करें, और उस फॉर्म में जो एनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, the following documents shall be annexed to the Form 27, which are certificate of incorporation और registration. Certificate of incorporation था LLP का, which Harshita talked about, वो annexed Form 27 के साथ, और instrument constituting or defining the constitution of the LLP, address of the registered office, and the registered office in India and outside India both will be
specifically mentioned that it should be in English language. Alteration in foreign LLP. Can anyone recall which form Harshita talked about? I'm very keen about. So alteration of foreign LLPs. Instrument changes. Any foreign LLPs. इसमें सारे फॉर्म के नंबर ही आने वाले ऐसे याद कर लो those people will win who know the form numbers Number of digits. please So alteration in foreign LLPs. There can be alterations like name of designated partners, offices, principal offices, partnerships, partners, number of partners, addition, deletion. So any foreign LLP is required to file in Form 28 any alteration defining the constitution of LLP within 60 days. कोई भी इंस्ट्रूमेंट में चेंजेस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है LLP का फॉरेन LLP नॉर्मल LLP was covered by तो फॉरेन LLP में चेंज हुआ 60 डेज में चेंज हुआ इंस्ट्रूमेंट चेंज फाइनेंशियल ईयर के एंड में फाइनेंशियल ईयर नॉट कवर्ड any change in the partners designated partners then on 28 only is there for registration in partnership within 60 days of the financial year. Registered principal office change. Any foreign LLP is required to file Form 28 any alteration in the registered or principal office of the LLP within 60 days of close of the financial year. ये बात कर रहे हैं जो इंडिया में ऑफिस है इंडिया के बाहर जो ऑफिस है वो LLP उसके कंट्री में फाइल करेंगे जो इंडिया वाला ऑफिस है उसमें अगर कोई चेंजेस है जो रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है प्रिंसिपल जो है इंडिया वाले के चेंज के लिए हम यहाँ फाइल करेंगे फॉर्म 28 within 60 days of end of financial. Last but not the least, Form 29 for an LLP. It is for the changes in the certificate addresses and cessation of business. Form 29 is to be filed by every one LLP in case of any alteration, modification, or certificate, incorporation, or registration. And it's Form 29 is filed by every LLP in case of any alteration or modification in the name of address of any person authorized accept services on behalf of foreign LLP in India, principal place of business of foreign LLP in India. Here also we can say it is talking specifically about the businesses in India, not outside India. It is to be filed by every foreign LLP in case of cessation to have a place of business in India. अगर कंपनी ने अगर LLP ने इंडिया का ऑफिस ही बंद कर दिया तो भी वो फॉर्म 29 फाइल करेगी इंडिया में इंडिया के बाहर थैंक यू नो yes sir To take continue for today, I am covering the compromise of arrangement therapy, fighting of dissolution or winding up of therapy, and penalties and prosecution. So first topic is compromise or arrangement of therapy. Commencement and procedure of compromise and arrangement. Commencement of proceeding. Section 60 of the LLP Act says that in order to commence any proceeding for a compromise or arrangement between LLP and its creditor or between LLP and its partners, an application has to be made by the LLP, creditor, partner, or the liquidator, pursuant to which
order of such creditor or partners to be held and conducted in such a manner as directed by the tribunal. So basically, एक application एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है एलएलपी और क्रेडिटर्स के बीच में, फिर एलएलपी और पार्टनर के बीच में ट्रिब्यूनल को कि आपको कैसे मीटिंग कंडक्ट करवानी है, और ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि मीटिंग आपको कैसे और कब कंडक्ट करानी है. नहीं, एक मिनट. सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, ये क्या है समझ में आया? मैंने एक्चुअली एक्सप्लेन के बीच में अपन एलएलपी का डिस्कस कर रहे थे, कंपाउंडिंग की बात करी, फॉर्म इनकॉर्पोरेशन की बात करी. अभी नया ये लेके आई है मैडम की कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट. तो ये क्या है? जब जब कहीं मान लो कोई एलएलपी सामने चल रही है और क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पा रही है, या आपस में पार्टनर हो गए हो, या पार्टनर्स क्योंकि अब खत्म नुकसान में चल रहे, तो पार्टनर्स ये चाहते हैं कि सब इस एलएलपी को हम वाइंड अप कर दें या खत्म कर दें. तो उससे रिलेटेड प्रोविजन है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट. तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि ये हो क्या रहा है आखिर, इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अचानक से क्या आ गया. जैसा कि वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स कॉम्प्रोमाइज, तो ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से मान लो क्रेडिटर को पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर विल अप्लाई फॉर द कॉम्प्रोमाइज विद द रिलेवेंट अथॉरिटीज कि सब ये एलएलपी मुझे पेमेंट नहीं कर पा रही है, इसलिए आप मुझे इस सेक्शन के तहत कॉम्प्रोमाइज आप मुझे डील विद कीजिए. तो with these, I think, with this background, she explained that what are the provisions and procedures related to compromise or arrangement. जब एलएलपी या फिर पार्टनर्स या क्रेडिटर्स ने किसी ने भी एप्लीकेशन फाइल कर दिया है ट्रिब्यूनल को, और ट्रिब्यूनल को बताना होगा कि किस फॉर्म या मैनर में आपको मीटिंग कंडक्ट करानी होती है. तो उसके लिए अब सेकंड है डायरेक्शन बाय द ट्रिब्यूनल. इसमें वो सबसे पहले आपको डिसाइड करके बताएगा डेट और टाइमिंग क्या होने वाले मीटिंग का, चेयरमैन कौन होगा, फोरम डिसाइड करेगा, और प्रोसीजर भी बताएगा मीटिंग का. उसके बाद बताएगा डिटरमाइनिंग creditor your partners and the value of the creditors or partner whose meeting have to be held, time within which chairman has to report the result of the meeting to a tribunal, and such other particulars as may be necessary for the meeting. Notice to be served upon the creditors or partners at least 21 clear days before the date of the meeting. If a majority represented by a three-fourth value of the creditors or partners agree to the compromise or arrangement, then the said each section by the tribunal by an order would be binding upon by all the creditors or partners in case of an LLP being bound up by the liquidators and the contributors. इसमें क्या हो रहा है कि आपके क्रेडिटर्स से सपोज करो कि 10 क्रेडिटर्स है, तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर्स सपोज करो 7 एंड वैल्यू इन टर्म्स में है 40 लाख के, तो 3/4 आपके 30 लाख के क्रेडिटर्स एग्री होने चाहिए, तभी आपका ट्रिब्यूनल सैंक्शन करेगा आपकी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की स्कीम को. और एक बार वो सैंक्शन हो गई आपकी स्कीम, तो वो फाइंड अप हो जाएगी सब कंपलसरीली सारे क्रेडिटर्स और पार्टनर्स के ऊपर, एंड एलएलपी वुड बी वाइंड अप बाय द लिक्विडिटीज एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स. Report the result. Chairman of the meeting shall report the result of the meeting to the tribunal within the time fixed by the tribunal or within 7 days in case no time has been fixed. Chairman report कर देगा अपनी मीटिंग के रिजल्ट्स ट्रिब्यूनल को within the time decided by the tribunal in case no time decided within the 7 days of the meeting. Confirmation of the petition. When the proposed compromise or arrangement is agreed to under section 60 of the LLP of the Act or its liquidator, shall within 7 days of filing of the report by the chairman present the petition of compromise or arrangement. However, if the said petition is not presented or cannot be presented because of non-approval, the opposing report under Rule 35 has to be filed for appropriate order.
Filing of order. Tribunal's order shall be filed by the LLP with the ROC within 30 days. LLP को required होता है कि वो ट्रिब्यूनल के साथ अपना LLP को required होता है वो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर ROC के साथ 30 डेज में फाइल कर दे. इन केस अगर उसने फाइल नहीं किया तो उसको 10,000 की पेनल्टी और 100 rupees per day maximum up to rupees per lakh in case of LLP and 50,000 in case of designated partner. Tribunal may at any time after the application has been made stay the commencement or continuation of any suit or proceeding against the LLP on such terms as the tribunal thinks fit until the application is finally disposed of. अब एप्लीकेशन तो फाइल हो गई ट्रिब्यूनल को, लेकिन ऐसा भी हो सकता है एलएलपी के अगेंस्ट में कोई भी कमेंट्स कोई भी प्रोसीडिंग्स पहले से कमेंट्स कंटिन्यू हो या फिर चल रही हो, तो उस केस में ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है वो उसको स्टे लगा सकते हैं उस प्रोसीडिंग्स पे जब तक उसकी फाइनल एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्पोज ऑफ नहीं होती. Section 61. Power of tribunal to enforce compromise or arrangement. Where the tribunal makes an order sanctioning a compromise or arrangement in respect of an LLP, it shall have the power to supervise the carrying out of compromise or arrangement. अब ट्रिब्यूनल ने अपनी स्कीम को सैंक्शन कर दिया, लेकिन उसके पास फिर भी है कि पावर है कि वो सुपरवाइज कर सकते हैं उस स्कीम को. अगर उसको लगता है कि इसमें मॉडिफिकेशन नेसेसरी है तो मॉडिफिकेशन भी कर सकता है. अगर उसको लगता है कि स्कीम एज पर मॉडिफिकेशन के बाद भी सही नहीं कर रही है तो वो ऑर्डर पास कर सकता है बाइंडिंग ऑफ द LLP. Because the tribunal makes an order sanctioning a compromise or arrangement in respect of an LLP, it shall have the power to supervise the carrying out of compromise and arrangement and may give the direction in regard to any matter or make such modifications in the compromise or arrangement as it considers necessary for the proper working of compromise and arrangement. If the tribunal is satisfied that the compromise or arrangement sanction cannot be worked satisfactorily, it may either its own खुद से या फिर किसी भी पर्सन के एप्लीकेशन से, जो पर्सन कौन होना चाहिए जो कि एलएलपी में इंटरेस्टेड होगा, वो ऑर्डर पे उसमें को ऑर्डर दे सकता है बाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी. सेक्शन 62 प्रोविजन for sanctioning of a compromise or arrangement proposed between a limited liability partnership and such person as a mentioned in that section. कौन सी पर्सन पेंशन थी अपने एलएलपी क्रेडिटर लिक्विडेटर और पार्टनर. A compromise or arrangement has been proposed for the purpose of in connection with a scheme for the reconstruction of any LLP or LLPs or the amalgamation of any two or more LLPs. Under the scheme, the whole or any part of the undertaking, property or liabilities of any LLP is the concern in the scheme is to be transferred to another LLP. The tribunal may either by the order sanctioning the compromise or arrangement or by subsequent order make provision for all or any of the following matters, namely transfer to the transferee LLP of the whole or any part of the undertaking, property or liabilities to any transferor. इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे इन आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी लाइबिलिटी और अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कराने के लिए. ट्रांसफर अपनी ट्रांसफरी को यूपीएल मतलब अपनी अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर सकता है होल और एनी पार्ट देयर ऑफ. कंटिन्यूएशन बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरी एलएलपी ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग फ्रेंडली by or against any transfer of LLP, solution without finding a provision to be made or any person who within such time in such manner as the tribunal direct dissent from the compromise or arrangement and any such incidental, consequential and supplemental matters as are necessary to secure that reconstruction or amalgamation shall be fully and effectively carried out. Our next topic is type of binding up and dissolution of LLP. So basically, first we will discuss the difference between the strike off and binding up of LLP. Striking off an LLP is the process of removing a different company from the registrar of companies. इसमें क्या होता है basically, जब आपने एक application फाइल कर, आप आगे पढ़ोगे लेटर साइड पे कि एप्लीकेशन फाइल करनी होती है फॉर्म 24 पे,
रिमूवल ऑफ नेम के लिए जब हमें लगता है कि हमारी कंपनी इनऑपरेटिव हो चुकी है, जब कंपनी एलएलपी अपनी एप्लीकेशन फाइल करती है आरओसी के पास रिमूवल ऑफ नेम के लिए. Winding up is a process of bringing a company's existence to an end. Authority ROC in case of winding up, authority NCLT, National Company Law Review. Company status in case of winding up must be inactive and it has no asset and liability. But in case of winding up, company status must be active and have asset and liability. Time frame in case of striking off, it is quicker process, and in case of winding up, it is a lengthy process. Complexity, striking off is less complex as compared to winding up, and winding up is a more complex due to the legal obligation and procedure. Legal provisions related to striking off. Legal provisions related to striking off the name of LLP from the registrar. The registrar can strike off the name of LLP from the registrar of LLP under the following circumstances. When the LLP is not carrying on any business or operation for a period of 2 or more years, and the registrar has a reasonable cause to believe the same for the purpose of taking suo motu action or striking off the name of the LLP. However, before striking off the name of such a LLP, reasonable opportunity of being heard shall be provided. जब एलएलपी अपने बिजनेस या ऑपरेशन 2 साल से और ज्यादा कैरी आउट नहीं करती है, या फिर एलएलपी अपना बिजनेस और ऑपरेशन 1 साल से ज्यादा कैरी आउट नहीं करती है, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म 24 में, जो कि हम लेटर डिस्कस करेंगे, से फाइल करिए रजिस्ट्रार को विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार. Before filing the application, certain three conditions are to be fulfilled. Approval for strike-off. A meeting of partners shall be called and approval or consent shall be obtained for making the application. Consent of the partners. We need to obtain consent from all the partners before filing the form 24. We need to close all its bank account and obtain a document. No liability shall be accepted, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास कोई एसेट भी नहीं होनी चाहिए, कोई लाइबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी एसेट लाइबिलिटी भी बिफोर स्ट्राइक अप खत्म हो जानी चाहिए. LLP shall file all the previous pending annual returns up to the due date of filing of form 24. LLP shall अपनी इनएक्टिव होनी चाहिए, बिजनेस या ऑपरेशन अपने 2 साल या फिर अपने कंडीशन 1 साल में तो अपन को लगता है जब जब फॉर्म 24 और 2 साल अगर आरओसी अपने आप फॉर्म 24 application to the registrar for striking of name. फॉर्म 25 हर्षिता ने कवर किया था डिफरेंट कंपनीज के लिए, और फॉर्म 24 है एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम. इसमें एनक्लोजेस आपको देने पड़ते हैं, जो अब अपन ने सबने देखी थी कौन कौन सी आपको कंडीशन बिफोर फाइलिंग ऑफ फॉर्म 24 फुलफिल करनी रहती है, वो यहाँ पे सारी आपको कॉपी फॉर्म 24 के साथ देनी रहती है. वो है आपकी डिटेल एप्लीकेशन, कॉपी ऑफ डिटेल एप्लीकेशन, copy of consent of all the partners, creditor, copy of authority to make the application duly signed by all the partners, copy of acknowledgement of latest income tax return, statement of account disclosing nil assets and nil liabilities, duly certified as true and correct by the auditor, the chartered accountant in practice, made up to a date not earlier than 30 days of the date of filing of form 24, affidavit signed by the designated partner, and other information can be provided as an optional attachment. जो उसमें डिटेल्स आ रही होंगी तो मैंडेटरी है, बाकी ऑप्शनल जो भी होगी आपको फॉर्म देख के देखना होगा. TAC requirement: the form is required to be digitally signed by the designated partner, and the fees is INR 500. स्ट्राइकिंग ऑफ अपन ने देख तो लिया कि अपन को समझ में आ गया कि स्ट्राइकिंग ऑफ जो है आपका टेम्पररी और पार्शियल क्लोजर है, आप इसको परमानेंट क्लोजर क्यों नहीं कह सकते हैं, मुझे बताना चाहिए. वापस से एलएलपी अपना एक्टिव होकर वापस से अपना काम चालू करना चाहती है, तो इसलिए सिर्फ टेम्पररी
पेज में कर रखा है, मतलब आईडी कब तक जाती है तो वापस आप रजिस्टर भी करा सकते हैं, ठीक है कि वापस कभी वो भी करा आप इसको आपने स्टॉक ऑफ तो कर दिया, लेकिन इवन आफ्टर स्टॉक ऑफ आप अपना नाम रीस्टेट करा सकते हो एनसीएलटी के पास ऑन एन एप्लीकेशन बाय एन अफेक्टेड शेयर होल्डर या एलएलपी. An LLP may accumulate certain liabilities which may help to jointly paid by all its designated parties. Now discuss winding up. अब वाइंडिंग अप और डिसॉल्यूशन की बात करते हैं, तो वाइंडिंग अप एक अपना प्रोसेस हो गया और डिसॉल्यूशन एक अपनी फाइनल स्टेज हो गई. वाइंडिंग अप से अपन गुजरेंगे तब अपन डिसॉल्यूशन के प्रोसेस को पहुंचते हैं. और वाइंडिंग अप एक बार आपने अप्लाई कर दिया, हो गया, तो आपकी ऐसे तो लाइबिलिटीज बिक गई, तो ये कंप्लीट और टेम्पररी क्लोजर ही होगा. ऐसा नहीं है स्ट्राइक ऑफ की तरह ये पार्शियल या टेम्पररी क्लोजर होने वाला है. क्या मानो, हमें भी बता दो कोई चीज डिस्कशन किया तो हम भी सुने ना, बढ़ जाए. Because one LLP is wind up, its existence cannot be revived and its assets are sold and liabilities are settled in such a way that there is absolutely no claim or counterclaim related to LLP remain valid. Modes of winding up of an LLP, there is a two mode, voluntary and by voluntary or by tribunal. Voluntary wind up. An LLP may be wound up voluntarily if the LLP passes a resolution to wind up by the LLP with the approval of at least 3/4 of the total number of its partners, and where the LLP has creditors, whether secured or unsecured, the winding up shall not take place unless the approval of such creditors takes place. इसमें आपको at least 3/4 of the total number of partners की approval लेनी पड़ती है winding up से पहले, voluntary wind up से पहले. अब ये अपन circumstances एक था अपना वॉलंटरी, एक था ट्रिब्यूनल. अब ये सर्कमस्टांसेस है कि ट्रिब्यूनल कब तक आपका वाइंड एक एलएलपी का वाइंड अप कर सकता है. एक एलएलपी दैट इज शुड बी बाउंड अप बाय द एलएलपी या फिर ट्रिब्यूनल, या एक तो पहली बात एलएलपी डिसाइड कर लिया हमें बाउंड अप होना है, या फिर if for a period of more than 6 months the number of partners of LLP reduced below 2. 6 महीने से ज्यादा आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से कम हो जाए. If the LLP has acted against the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state or public order. If the LLP has made a default in filing with the registrar the statement of account and solvency or annual return for any 5 consecutive years. आप मुझे ये बता सकते हैं, अभी अपन ने पढ़ा भी है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न की फॉर्म नंबर क्या है. If the tribunal is of the opinion that सही है कि नहीं वो तो बता दें. सही है, सही. If the tribunal is of the opinion that it is just and equitable that the LLP could be wound up. Penalties and prosecution. Contravention of provision of section 7, that is failure by the LLP to have at least 2 designated partners who are individuals and at least one of them should be resident in India, then the penalty should be levied not less than 10,000 rupees, but which may extend to 5 lakh rupees. Failure by the LLP to file with the registrar the particulars of every individual who has given his consent to act as designated partner in such form and manner as may be prescribed within 30 days of his appointment. Then the penalty would be not less than 10,000 rupees, but may extend to 1 lakh rupees. Failure by the LLP to appoint a designated partner within 30 days of a vacancy arise for any reason, and provision of subsection 4 and subsection 5 of section 7 are not adhered to in respect of such new designated partner. The limited liability partnership and its partners shall be punishable with a fine not less than 10,000 rupees, but which may extend to 1 lakh. If any person or persons carrying on business under any name or title of which the word LLP or LLP or any contract
transaction or invitation thereof is no more the last word or the word without being duly incorporated as LLP. Every such person or person shall be punishable with fine which shall not be less than 50,000 rupees, but which may extend to 5 lakh. Thank you. तो आई थिंक इन्होंने अपने टॉपिक्स काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं और बट एट द सेम टाइम मेरी रिक्वेस्ट इनसे ये है कि थोड़ा